डिस्ट्रिक्ट में रेफरल पाथवे बनाए हैं जिससे वो पुलिस को, लीगल एड को या हेल्थ की सर्विसेज को या साइको सोशल सपोर्ट की सर्विसेज उन सबको मुयस्सर हैं और वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू बेटा। किसका है ये? आज का जो इवेंट है ये बेसिकली पिछले साल जो सैलाब आया था जिसमें सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, उसमें जो काम हुआ आपको पता है कि 33 मिलियन लोग बेघर हो चुके थे और उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन 6 लाख ख़वातीन ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, उसमें 73,000 ऐसी थी जो लास्ट ट्राइमेस्टर में थे। जैसे कि आपको पता है कि सैलाब की वजह से तमाम हेल्थ केयर के जो सेट्स वो थे वो सब तबाह हो चुके थे, बह चुके थे। तो उसमें इंडस हॉस्पिटल की टीम ने वहाँ पर मोबाइल यूनिट्स लेके गए और फिर से ख़वातीन को और लोगों को सिर्फ इलाज के लिए नहीं, सिर्फ फिजिकल इलाज नहीं, मेंटल हेल्थ के ऊपर और बहुत सी चीज़ों का काम किया। उसके अलावा जो प्रोटेक्ट किया उनको वायलेंस अगेंस्ट वायलेंस के ऊपर, और फिर उनकी कैपेसिटी बिल्ड की, उनको सिखाया पिलाया और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसका आप खुद मुशाहिदा कर लेंगे। जो स्टॉल लगे हुए हैं आप देख लेंगे कितना काम है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी इंडस हॉस्पिटल की जो टीम है, जो कि ख़ास तौर पर डॉक्टर मातलब इनके साथ जो सारी टीम है, एक एक वर्कर ने, हालांकि ऐसे भी लोग थे जो कि खुद उनके घर तबाह हो चुके थे और उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और अपने से बढ़कर उन लोगों की मदद की जो कि उस वक्त सैलाब से तबाह हुए हुए थे। थैंक यू वेरी मच जी। आ जाए मैडम। हाँ क्यों? ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महतलत है और मैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क में डॉक्टर बारी और डॉक्टर जफर की टीम के साथ काम करती हूँ। हमने फ्लड में हेल्थ केयर से शुरू किया और मकसद ये था कि लोगों की हेल्प की जाए, लेकिन हेल्थ को अलहदा नहीं देखा जा सकता था। बहुत सी औरतें और बहुत सी बच्चियां हमारी ऐसी थी जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो रही थी, उनके बड़े सारे मसाइल थे। तो हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई और सारी उन बच्चियों को जो कि अब्यूज जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए का शिकार हो सकती थी, उनको प्रिवेंट किया, उनको हमने एम्पावर किया, उनको हमने ट्रेनिंग दी, उनको हमने हेल्थ ठीक की, मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग की और उसके बाद उनको हमने सिलाई, कढ़ाई, मेकअप, काफ़ी सारी ऐसी ट्रेनिंग की जिससे वो अपना लाइवलीहुड बनाना शुरू हुई, वो फाइनेंशियली एम्पावर हुई और बड़ी डिग्निफाइड होके अपनी और अपनी फैमिली की मदद करना शुरू हो सकी। इससे ना सिर्फ उनकी हेल्थ बेहतर हुई बल्कि उन्होंने माशरे का फाल और डिग्निफाइड होके मेंबर होने के नाते काम भी किया। आज जो हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मना रहे हैं, इसमें आप बहुत सारे स्टॉल्स देखेंगे। ये हमारे कम्युनिटी से आए हुए लोग हैं। इन स्टॉल्स में उन बच्चियों ने जो चीज़ें बनाई वो आपके सामने हैं और उसके बाद उन्होंने उनको सेल करके अपनी लाइवलीहुड का खुद न सिर्फ अपने घर का बल्कि अपने साथियों के लिए भी एक इंतज़ाम किया। दूसरी बात कि जो बच्चे पैदा होने थे, जो माएँ ऐसी थी जिनके बच्चे पैदा होने थे और वो साथ ही वायलेंस का भी शिकार थी, उनके लिए हमने मैटरनल हेल्थ ऑन व्हील्स एक जो बस आप देख रहे हैं वो बनाई और इंडस की टीम ने 2 दिन के अंदर वो सारा इंतज़ाम किया। वो पहला बच्चा जो पानी में फंसी माँ के यहाँ पैदा हुआ आज साल का है और आज हमारे साथ है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। वो एक बच्चा नहीं, एक जान नहीं, एक फैमिली थी और इसके बाद बच्चे पैदा होते गए तकरीबन 200 डिलीवरीज हुई। वो औरतें एम्पावर्ड हुई। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए बच्चियों के वायलेंस के, जो कि उनके घर वालों के साथ थे। वो हेल्थ केयर के लिए आते थे लेकिन हम उनको 1 विंडो ऑपरेशन में सारा कुछ प्रोवाइड करते थे, प्रिवेंट भी करते थे और उसके बाद लीगल एड के लिए हमने रेफरल पाथवे भी बनाए। शुक्रिया। थैंक यू जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल में ये एक फंक्शन कर रहे हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल में आप लोगों ने सबने देखा जब सैलाब आया तो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। हमने वहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया, मगर वो काफ़ी नहीं था। वहाँ पे जो ख़ास तौर पे बच्चियाँ और ख़वातीन, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सामने आई, और उनको देखते हुए उनकी मदद करने, उनको जेंडर वायलेंस से, यानी कि जिस तरह से ख़वातीन के साथ जुल्म होता है, उनसे बचाने और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें की। तालीम में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, कि वो अपने लिए कुछ काम कर सकें और उससे कमा सकें, वो तमाम चीज़ें इंडस हॉस्पिटल करता रहा है। और आज हम इसको यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसमें यूनाइटेड नेशन की जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं वो हमारी, उनकी फंडिंग भी थी, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे पब्लिक फंड के लोग जिन्होंने मदद की और सैलाब में भी पैसे दिए, उनको भी बुलाया है। और ये दिखाने के लिए कि ये अस्पताल सिर्फ एक मरीज़ों के इलाज तक ही नहीं है, मगर ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह का एक फ़िलॉसफी है, जिसमें गरीब और जिनको ज़रूरत है उनकी जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे मदद कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको करें। और आप सबके ताउन की इसमें बहुत शुक्रिया भी। और मैं चाहूँगा कि जो जो देख रहे हैं, पब्लिक जिस तरह से भी इन्वॉल्व है, वो इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट करे, ताकि इस मुल्क में वो लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ हम बेहतरी कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर जफर जैदी और मैं इंडस हेल्थ नेटवर्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। थैंक यू वेरी मच। हो गई है मगरिब की। जो लोग नमाज अदा
as many other countries, made the commitment by 2030 to eliminate or to reduce the cases of gender-based violence and child marriage. And child marriage is one of the highest in sin. So there are many challenges to combat gender-based violence, but there are also many opportunities in sin. As UNFPA, we prioritize support of governments in fighting with the gender-based violence, and we do a lot of work jointly on improvement of legislation, policies, strategies, but also supporting and implementation of those strategies, because sin has very good laws, but implementation needs really acceleration in sin. So UNFPA has supported flood response last year, and GBV integrated support to sexual reproductive health, and GBV was one of the priorities. And Indus Health and Hospital and Health Network has been one of the great partners of UNFPA, with whom we were able to reach out to the communities, to women and girls in far-flung areas. Indus Hospital and Health Network has a great infrastructure, mobile units, ambulances, doctors. They were able to connect through telemedicine. So those innovation and digitalization help really to ensure that women in need in flood-affected areas to get timely life-saving services in terms of reproductive health, safe deliveries, and gender-based violence services. On this note, I would like to thank Indus Hospital, Health Network, and Dr. Maha and all the her team, amazing team, for organizing such a grand event today. And we are looking forward to hear more about the experiences Indus Hospital has, got throughout the cooperation with UNFPA, but also to hear about the ways forward, how together we can combat the gender-based violence. And gender-based violence is a huge issue. We cannot combat one organization or one UN agency cannot do the work. So we will be only successful if the initiatives or all the efforts will be led by the government and supported by civil society organizations, by private sector, by media. So together we can combat and we can be successfully eliminating gender-based violence. By 2030, we have only 7 years, and unfortunately, we are not on track to combat gender-based violence. But together we can accelerate the efforts, accelerate the progress, and thanks to implementing partners like Indus Hospital and Health Network to provide such a opportunity for UNFP to accelerate the progress. Thank you. Thank you very much. Bayramgul, my name is Bayramgul. I'm head of UNFP office in Sindh province. Thank you very much. Thank you. इसकी recording मिलेगी ना? I can request everyone to be please seated.
If I can request everyone to be please seated. सबसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ रखें। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने वाले हैं। सलीम तबानी साहब, ये बारी साहब के साथ। वो बच्ची भी रो पड़ी है, अब हमें शुरू करना चाहिए। सबसे दरख्वास्त है कि वो प्लीज अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। यास्मीन बाजी, प्लीज कम। यास्मीन बाजी यहाँ आ जाइए आगे। आ जाइए यहाँ पे यास्मीन बाजी, राइट हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। इंडस की टीम से दरखास्त है कि गेस्ट्स को अशर करके प्लीज आगे ले आइए। जी अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम सैयद मशहूद रिजवी है। आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर रिसोर्स जनरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप्स एट इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से करेंगे, जिसके लिए आपकी तवज्जो दरकार है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उनको क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। Can I request everyone to please rise for the national anthem?
Thank you. And thank you for being here in such large numbers. आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Without further ado, I would like to request our CEO, Chief Executive Officer of Indus Hospital and Health Network, Dr. Zafar Zaidi, to please join me at the stage and welcome all the distinguished guests and donors as well as media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. And thank you, Mashood. It is a great pleasure to see all of you here today in this occasion. We are celebrating the work which Indus has been doing, and we are very grateful to UNFPA who has supported it. All our donors, and many of them sitting here, who have in their own ways have been helping us and helping Indus, and especially during the flood times when there was a lot of requirement of relief, which Indus came forward to actually deliver. And so I'm very grateful for all of you who have come and are on this occasion today. There are many dignitaries from the health sector, both in the government sector as well as in the private sector, who are with us, and especially the media. और मैं मीडिया का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज आए हैं और इस ओकेजन पे इस इवेंट को कवर कर रहे हैं. So there's a lot that has been happening जो Indus ने इस पूरे have been doing in all of this activities, and we want to showcase this today. So I welcome you to come and see, be part of what we have been doing, and also ask questions to all the people who've been involved. And actually it is also a celebration of all our teams at various levels, at various places, who's delivered beautifully and beyond their capacity, many times going out of the way for the care of the patients, of the needy, of the poor. So thank you all for making this occasion a success, and I welcome you again. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Zaidi Saab. And we are also grateful to Dr. Abid Jalaluddin Sheikh Saab. He's DG Rescue 1122 Sindh, and he has been very supportive. His team has been very supportive, especially for our referral cases. So thank you for your presence, sir, today at this very important event. I would now like to introduce to all the audience Ms. Behram Gul. Ms. Behram Gul has 25 years of progressively responsible work experience within government, non-governmental organizations, and the United Nations. Ms. Behram Gul holds an MSc in Management and Administration of Non-Governmental Organizations, Social Policy, Department of London School of Economics. I also went to London School of Economics in 1996, so I happen to be your senior, so there you are. Ladies and gentlemen, if it was not for Ms. Behram Gul's support, this event wasn't possible, but this event is just a showcasing event. All the work that our wonderful team does, led by Dr. Talat, would have not been possible. So please give a big round of applause to Dr. Behram Gul. And if I can request you kindly to give your own opening remarks. Thank you so much. Thank you so much. It was really nice to know that you were at the same school. And also, I'm not a doctor, but in my 25 years of experience in family planning sector, I should have done doctor's degree. But and I'm, with the interaction with doctors, with all the medical specialists, really, I'm excited to be in this sector. And thank you so much for this introduction. So, today we are gathering for the very nice event at 16 Days of Activism. And on behalf of United Nations Population Fund in Pakistan, I would like to welcome all of you today to mark actually
the conclusion of the 16 Days of Activism. It's a UN-wide campaign, global campaign, to bring to attention of gender-based violence issues, including harmful practices, to the attention of the governments, of political establishments, civil society organizations, media, communities, and community-based organizations. For UNFPA, gender-based violence is one of the transformative results globally, along with the two transformative results, which is on unmet family planning needs and also preventable maternal mortality. So gender-based violence, as you can see, including harmful practices, is one of the priorities for UNFPA, not only globally, but also in Pakistan. So unfortunately, the gender statistics, prevalence of gender-based violence is still high in Pakistan. As I mentioned today, we had in this morning, we had high-level conference on multi-sectoral coordination committee on gender-based violence, where I highlighted that so according to the recent demographic and health survey, 39% of Pakistani women experience sexual violence from their spouses, and more than 90% of Pakistani women at least once in their lifetime experiences domestic violence. So with these statistics, it's will be very challenging to achieve the sustainable development goal, which governments globally and also government of Pakistan made the commitment. For UNFPA, we also committed to eliminate gender-based violence by 2030. But with these 7 years until 2030, with the progress which we are now, so unfortunately we are out of track, we are not on track. So what we can do, we only need to accelerate the efforts, bring all the partners, stakeholders, civil society, media, donor organizations, and government has to lead this effort to ensure that we eliminate the gender-based violence across all Pakistan, including Sindh. I just wanted to highlight that child marriage is also one of the greatest problem issue here in Sindh. And as UNFPA, we has done also a lot of efforts together with the government, with the relevant departments, with civil society organizations to address the child marriage. And we will also address the issues of sexual violence together with the civil society organizations and under leadership of government of Sindh. We have developed sexual violence response framework. We supported the improvement of policy and legislative framework, but also the issue of implementation. While Sindh is has very progressive laws, the implementation is lagging behind. So we need to accelerate and focus on quality of implementation of legislation. So coming to 16 Days of Activism, and our partnership with the Indus Hospital and Health Network, especially this partnership has started 1 year ago when Sindh was hardly hit by flood. And I met Dr. Mahat Talat in Larkana at the onset of flood. And when I saw that the commitment of herself, but also the team of Indus Hospital, we believe that together we can reach those women in need, women and girls, especially pregnant women who were, trapped in the flood. It was very difficult to reach out to them. But with the innovation, with the commitment, the Indus Hospital and Health Networks team had, we really reached out to those pregnant women, especially because for UNFPA during flood, the most important priority was to deliver safe, life-saving services to pregnant women, especially, but also to provide gender-based services, gender-based violence services to women who were under, very difficult conditions of trauma and psychological disorders. So I really appreciate the efforts and contribution of Dr. Mahat Talat under her leadership and the team of Indus Hospital, and my real appreciation to Chief Executive Officer Dr. Zafar for
putting all the, coordination efforts and all the resources which you had to support the flood response. It was really collective effort to ensure that no mother dies while giving birth. And it was in line with the UNFPA mission, which we strive to develop the world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person has opportunity to realize their potential. And I believe that with such exemplary efforts, with support of government of Sindh, health department, and I see the counterparts from the health department, RMNCH, LHW program, Dr. Sakib. So we've done a great of effort to, at least to minimize the risk of women dying while giving birth. So we ensured that family planning services continued to be provided despite the destroying, huge damage to infrastructures. But today, one year later, so we can be proud that at least we were able to minimize the risk. At least we were able to provide the services to women and girls. So, in conclusion, I once again want to highlight the efforts and thanks and appreciation on behalf of UNFPA. UNFPA is committed to continue supporting addressing gender-based violence in Sindh, especially when it comes to building institutional capacity, strengthening the systems to strengthen the state response to GBV, and also bringing media, civil society organization, male engagement in addressing and breaking the social norms in Sindh, which is required a lot of resources and support. And one only example now, I just wanted to mention that when I met Dr. Mah last year in the bus, when she presented that there is a labor room there, and then with the support of Indus Hospital, we have a baby who was born in this labor room in Larkana, the flood-affected district. And today we have this baby girl. Yes, her name is Sakina, and she's visiting us. I think she's a bit excited, to be among so many guests. But yeah, I just wanted to thank again Dr. Mak for your support, for your team, Dr. Zafar for efforts, and thank you so much once again. Thank you. Thank you. Thank you so much for your generous support, Ms. Ramgul, and thank you so much for what you have had to say. And obviously, we're very proud of Dr. Ma and her team. But one of my mentors gave me a non-negotiable that whenever you are faced with captive audience, particularly donors, you should never leave the stage without reminding them how awesome we are. So I will now present to you very briefly the story, the journey, and the scope of Indus Hospital and Health Network. So with that, it's a remarkable story of serving humanity, thought and dreamt by one and only Dr. Abdul Bari Khan, who is now our president, joined hands by his friends, Dr. Zaidi, Dr. Amin Chinoy, and Dr. Akhtar Aziz. And now he has a whole community of support, not only in Karachi, but in Pakistan and across the world. I'd like to remind, with perspective to today's event, of a great saying and a quotation from Nelson Mandela, who said that the true character of a society, some quote him by saying that the true character of a civilization, even much more than a society, is revealed in how it treats its children, women, and elderly. And obviously, if we do our own reality check today, sitting in Pakistan, it is not a very promising one when it comes to these vulnerable segments of our society.
So these are the C's that I want to talk about. So 400,000 households every year in Pakistan are pushed into the destitute of poverty just because they cannot afford basic health care. 400,000, and that's a conservative number. 200,000 women die yearly giving birth. I mean, this woman obviously was very lucky that through your support, we were able to provide her with safe delivery options. 9 million alone were pushed into the poverty, under the poverty line as a result of the flood. And what to talk about the stunted growth, and what to talk about how many children are we losing. So the moral question that we must ask ourselves, that are these avoidable deaths or are these happening as a natural course of action? At Indus, we would like to think that these are all avoidable deaths. I mean, these lives should have not been cut short if these people and these communities were given the kind of support that we were able to galvanize through flood, and the kind of support that we do galvanize in our daily work. So the 4 C's faced by the people of Pakistan and the larger segment of people of Pakistan is that there is a catastrophe of health in Pakistan. It's an advanced stage of emergency. It is an absolute catastrophe. There is a crisis of lifestyle, which is then creating another burden of disease across the society. There is an environmental calamity. We keep hoping that, okay, this flood came and hopefully the next one won't come. The next one will come, because there is an environmental calamity, and it is knocking at our door. It has already swept us off our feet. And lastly, there is social capitulation. The kind of emotional and social trauma that the communities are faced with as a result of not having health care is unspeakable. But there is always the last C, and that C applies to each and every one of you present here today, which is the C of choice. There were many invitations sent, but you are here. We were galvanizing a lot of support from donors for flood, but you came forward because you made an individual choice, a personal choice, and an institutional choice to be not bystanders and spectators of disaster, but you participated actively and you joined hands with us so that we can save hundreds and thousands of lives. So a big round of applause to all of you for making that choice with us. So Indus, since its inception is 2007, has been going after 3 particular things to try and break the cycle of vulnerability. One, we want to provide high quality access to healthcare indiscriminately. We don't see who is who. We try and do our best given our resources, and the kind of models that you see that Dr. Ma and her team have placed here are speaking volumes of the fact that, be it a container, be it a van, be it just a delivery service, we do not take anything lightly when it comes to providing quality healthcare. We want to continue to be free of cost, because we are acutely aware of the fact that people don't even have rent to pay for rickshaws and taxis to come and attend their appointments, what to talk about very expensive medical procedures. So we have been, as a result of your support, we have continued to be absolutely free of cost. And the most important part, which Dr. Ma's presentation will very painfully unravel in front of you, that how dignity and respect is capitulated in the process of provision of healthcare. We try and uphold that everyone needs to be treated, but everyone, more importantly, needs to be treated with utmost dignity and respect. So taking that all forward, 15 years of experience, we have now got another 15 years of plans rolling out as we speak. And we are focused on 6 distinct directions. Number 1, we are heavily invested in primary care. We know that creating, constructing state-of-the-art tertiary care hospitals is not the answer for provision of healthcare for all. We have got to stop the burden of disease at the grassroots level. That is why we are heavily invested at the primary care level. Number 2,
We want to increase the service delivery by forming public-private partnerships with the government's infrastructure, by building their capacity so that their capacity increases and their constitutional responsibility is upheld as a result of that capacity increase. We are very mindful of the fact that human capital, particularly in the rural areas, is a very big problem for Pakistan. Therefore, we are in the process of building one of Pakistan's largest health sciences university by the name of Indus University of Health Sciences. And out of 7 schools, 4 schools are already functional. Inshallah, the medical school, the dental school, and the school of pharmacy will be functional in 3 years' time. And we are focusing on all spectrums of provision of healthcare, ranging from public health to community health to pharmacologists and so on and so forth on that front. Research and development. Pakistan should have a lot to offer when it comes to research and development regionally and globally. Indus is trying its best to position not only its own institution, but the country with it at the very, very helm of research and development and innovation in healthcare in the world. We want to have an integrated approach, and particularly when it comes to primary care, we understand that health is one of the many missing pieces of the jigsaw puzzle. We have got to address safe water. We have got to address the provision of livelihoods. We have got to address the provision of food security. And Indus is the only and the most unique health network in the country which checks 14 out of 17 sustainable development goals, alhamdulillah. मुझे लगा आप नहीं बजाएंगे ताली, इसलिए मैं चला जा रहा था. But lastly, but not the least, we are very mindful of the fact that no government, no private sector entity, or no international body can fulfill the requirement of the needs of the people of Pakistan alone. That is why we want to partner with anyone and everyone, particularly when it is symbiotic and our value system is absolutely aligned. So, to sum up, Indus is the only and the most unique network in the private sector, not for private sector, which is covering all spectrums of healthcare provision in Pakistan, from tertiary to secondary to primary to prevention to the provision of safe blood to the provision of rehabilitation services, as well as education provision for the people and the young people of Pakistan. There is all the governments we work with, but there is one government, one provincial government that has been with us from the very, very outset of our creation, and that is the government of Sindh. And I request for everyone to put their hands together for the government of Sindh for providing us with the sustenance as well as with the grant, not only for the institution, but always looking towards us to partner, be it DHQ Badin Hospital, be it other interventions that we have made during COVID. So we are very, very grateful to Government of Punjab, Government of Balochistan, as well as all other provincial governments, but particularly when it comes to our institutional development and financial support, Government of Sindh surely has been the most generous partner that we have had in the past many years. I started with Mandela. I'm going to end with Ghalib. And this is self-explanatory to people like Dr. Zafar Zaidi, but I will do my ignorant best to explain it to you. Rashk hai asaish arbab ghaflat par asad. Yani Ghalib jo hai wo rashk kar rahe. He is envious of the people who are just living in their own oblivion, as if they are not bothered by anything, any disaster, any capitulation. He is envious of those people. But you are not those people. You are the next sentence of Ghalib. Each and every one of you. Pecho tabe dil. यानी दिल का जो इस्तराब है, दिल की जो बेचैनी है, जो हार्ट रेंचिंग फीलिंग है, नसीबे खातरे आगाह है, वो सिर्फ उनके लिए है जिनको आगाही है. तो आपको मुबारक हो अपनी आगाही, बट इट इज़ अ पेनफुल आगाही. लेकिन हमें यकीन है कि आप हमारे साथ शाना बशाना चलते रहेंगे. I think I've done justice to tell you how awesome we are and how looking forward we are towards your continued support. Thank you so much. We will play a short documentary, and after that, Dr. Ma will continue to tell you as to how awesome we are when it comes to primary care provision.
In the heart of Sindh, a story of transformation and empowerment emerges to mitigate gender-based violence and promoting sexual and reproduction health. But to understand the need for this intervention, we must look back at the devastating floods of 2022 in Pakistan, a catastrophe that not only destroyed infrastructure, lives, and livelihoods, but also left behind an immense healthcare void and giving rise to a surge in gender-based violence that affected millions. पोइ साल असांखे तमामु घणी तकलीफ़ आई ऐं बरसाति बि ॾाढी हुई सभिनी खे मलेरिया बुखार बि हुयो पताल परे आहे इलाही पंधा उन जे में असांखे मसइलो थी पियो गलत नई रोड रस्ते जी इलाज जी असांजी उमेदवारी हुई मूंखे चौथो महीनो ज़ाया थी वियो हिननि चयो त तव्हां कोई बि ॿियो महिनत वग़ैरह न कंदो ख़र्च वग़ैरह न पियो ॾिए रोज़ तशद्दुद कंदो हुयो पोइ त मूंखे ख़बर पई इहे नशो बि कंदो आहे जब 2022 का फ्लड आया तो वहां जाके एक अजीब सी बेबसी थी हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें तो इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क ने UNFPA के तामुन के साथ हमने जो बहुत सारे गैप देखे वो सिर्फ हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं था उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो औरतें और बच्चियां थी उनका जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ से ज्यादा वो वल्नरेबल हो गई थी प्रोन हो गई थी सिचुएशन ऐसी हो गई थी मैं जब खुद भी फील्ड में गई तो हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करें जो सिर्फ एक चीज को ना एड्रेस करे बल्कि वो इस तरह से हो कि वो सारी इन टोटलिटी देखे जो उसमें उनकी हेल्थ को भी देखे जो उनकी प्रोटेक्शन को भी देखे जो उनको एम्पावर भी करे जो उनको स्ट्रेंथ भी दे जो उनको डिग्निफाइड भी करे तो हमने UNFPA के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसमें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी डाला और उसमें वुमेन गर्ल फ्रेंडली स्पेसेस बनाए Providing sense of security and protection to normalizing lives post-disasters. IHHN, with support from UNFPA, established women's and girls' friendly spaces, where the vulnerable women are not only being given awareness sessions and psychosocial support, healthcare, referrals to essential life-saving services, but also being equipped with skills through training, so they can get empowered, rebuild their lives, and emerge as respected members of their communities. जॾहिं मां इंडस जी टीम सां मिलियमि त मां उन्हनि खे हिकु पंहिंजो ॿियो मसइलो बि बयानु कयो उन्हनि मूंसां अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं मूंखे दिली दिमाग़ी अहिड़ो सुकून मिलियो लीगल सपोर्ट जी तरफ़ां जेको असांखे मिली हेल्प हुनजे करे मुंहिंजो मुड़ुसु हाणे मूंसां सही आहे मुंहिंजे लाइ सभ खां वधीक ॻाल्हि इहा आहे त हुन मूंखे इजाज़त ॾिनी आहे मां हाणे पंहिंजी महिनत करे पंहिंजो गुज़र बसर करे थी सघां In addition to regular healthcare services and medical camps, a telehealth initiative was born, an innovative approach to address healthcare challenges of communities living in far-flung areas with no hope and access to healthcare. इंडस अस्पताल में आई सां कराची वारी मैडम वटि हुन मूंखे चयो त 3-4 चकर कयईं सही कयसि मुफ़्त में कयसि दवा बि मुफ़्त में ॾिनसि दवा ॾाढी सुठी ॾिनई असांखे निंढड़ी ॼाई मूंखे निंढड़ी बि मुंहिंजी सही आहे मां बि सही आहियां At the heart of telehealth revolution were the unsung heroes, the lady health visitors, who traveled across challenging terrains, taking awareness and healthcare to the doorstep of anyone and everyone who needed it. मां हमवेल नर्स आहियां ऐं जेको आहे असां वटि हिकिड़ी टेबलेट आहे जंहिं ते जेको आहे असां पेशेंट खे ॾेखारींदा आहियूं ऑनलाइन डॉक्टर ॾिसंदो आहे जेकी हुनखे बीमारी हूंदी आहे उहा ई जेकी दवा आहे असां वरी उन पेशेंट खे ॾींदा आहियूं Humwell, the digital health solutions partner, played a pivotal role in harnessing technology to connect patients with consultants miles away. The telehealth initiative transformed lives by providing access to healthcare at the doorstep, empowering women, and revitalizing hope in these communities. हमवेल जे ज़रिए असां डॉक्टर सां ॻाल्हायो घर जे अंदर ई असांजो इलाज थियो मुफ़्त ऐं जेको आहे दवाऊं मुफ़्त मिलियूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अॼु असां उन जे वजह सां सिहतयाब आहियूं
इस सारे सफर में जो चैलेंजेस आए, जो लेसन लर्न हुए, उससे किस तरह सस्टेनेबिलिटी आया, इन बच्चियों को किस तरह से हम ताकतवर बनाएं और ये किस तरह से सस्टेनेबल रहें। हम हमेशा कहते हैं कि रीचिंग द अनरीच्ड, हम रीच तो कर गए लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए और ये सर्विसेज, ये एम्पावरमेंट, ये प्रिवेंशन वहां रह जानी चाहिए। As we follow the stories of Rashida, Najma, and Mrs. Z, we see numerous challenges. But most importantly, we see courage and change. Their stories are a testament to the resilience of the human spirit and the power of targeted interventions. IHHN's mission continues as each day brings us closer to a world where no woman or girl is left behind in the shadows of violence. जी थैंक यू। अब आई, वो डॉक्टर्स भी कहते हैं, अब आई रिक्वेस्ट all of you, if because this is not I'm asking for Dr. Ma, I'm asking for all the team जो बाहर गई in unbelievable circumstances, if as she approaches the stage, if we can give her and through her, if we can give her team a standing ovation, please come. अस्सलाम वालेकुम। मशहूद, आपने मेरे लिए बात करना मुश्किल कर दिया है। आज की जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का थीम है, कहानी बदलेंगे, मैंने कहा तो कहानी हम कैसे बदलेंगे ये हमने देखना है। और कहानी मैं नहीं बदल सकती, हम सब मिल के बदलेंगे। हम सब वहां तक जाएंगे जहां पे ज़रूरत है और सिर्फ उसको दवा, पैनाडोल, पैरासीटामोल देके वापस नहीं आएंगे, उसको इन टोटलिटी देखेंगे, उसको इज्जत मिले, वो रिस्क अपना खुद कमा सके, वो डिग्निफाइड होके कम्युनिटी में वापस जा सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मैं हमेशा कहती थी रीचिंग द अनरीच्ड। इनिशियली मुझे लोग पागल समझते थे और अभी भी समझते हैं, क्योंकि जब हम लाड़काना गए और बहरोम गुल से मिले तो वी वर हैविंग ए बिग कैंप। मशहूद ने मेरी टीम को सैल्यूट करा दिया और उस वक्त बहुत डिफिकल्टी थी। आई एम रियली थैंकफुल। मैं अपनी टीम का नहीं, मैं डॉक्टर बारी और डॉक्टर जफर की टीम का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शुक्रिया अदा करूंगी। ये टीम वर्क था, ये झगड़े थे, लेकिन सबका मकसद एक था कि वहां तक पहुंचना कैसे और हेल्प करनी कैसे है। तबानी साहब बैठे हुए हैं, 2 रातों में हमें बस बना दी। Behram Gul said there are lots of women in the flood who needs assistance for their deliveries. So how we can reach there? So I reached to my seniors and we have bus in 2 nights, which was not possible. And we have started deliveries over there. Reaching the unreached खत्म नहीं हुआ, कहानी बदलेंगे और मिलके बदलेंगे। और मुझे यकीन है कि आप लोग साथ देंगे। इस पे ज्यादा ना पैसे लगते हैं, बस यहाँ से यकीन लगता है। जब हमने बनाई बस तो इसको चलाना कैसे है, मुझे ये यकीन था कि ये अल्लाह चलाएगा और ये चला रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं बोलूंगी नहीं, आप सबको पता है, ये सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं कि कितने औरतें जो हैं उनको एंटीनेटल का भी एक्सेस नहीं है। एंटीनेटल क्या, उनको रोटी नहीं मिलती तो उन्होंने कहाँ हेल्थ केयर पे जाना है। हमारे यहाँ तो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ही नहीं है और जब औरत की बात आती है तो बहुत पीछे रह जाती है। तो उस हेल्थ सीकिंग बिहेवियर से ज्यादा हेल्थ केयर को और क्वालिफाइड हेल्थ केयर को कैसे उनके डोर स्टेप तक लेके जाना है, ये हमने किया और ये हमने मिल के किया। वो सिर्फ एक बंदे के करने से नहीं हो सकता था, वो हम सब ने मिल के किया। आज मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं,
जो 1 घंटे में हेल्थ कैंप कर देते थे उस जगह पे जहां कोई नहीं जा सकता था। अगर वो वहां पे ना होते तो पॉसिबल ही नहीं था। मेरे एक डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में एक ऐसा बच्चा भी था जो खुद बीमार हो गया, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। मुझे पता चला कि वो 6 दिन से उसको बुखार है, लेकिन उसको ये पता था कि रास्ते सारे बंद हैं और काम यहाँ से मैंने करना है। तो ये पॉसिबल नहीं था कि इन सारे हेल्थ सीकिंग को अनरीच्ड एरिया तक पहुंचने के लिए अगर हमारी कम्युनिटी में टीम मौजूद ना होती। और जो हमारा सेटअप था वो क्रॉस पाकिस्तान था, और इसकी ब्यूटी ये थी कि ये सिर्फ एक बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल नहीं था, उसके लिए सेकेंडरी भी थे, उसके लिए प्राइमरी भी थे, उसके लिए डिजिटलाइज सॉल्यूशन भी थे, और उसमें कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी के वर्कर्स के थ्रू भी हम पहुंचे। जहां कोई नहीं जा सक रहा था हम वहां गए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हमने काम कर लिया, क्या काम खत्म हो गया? आप लोगों को लगता है काम खत्म हो गया? आज भी लोग पानी में हैं वहां पे, जिनके घर खराब हो गए, दीवारें टूट गई, उनकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो गई, और 5.7 मिलियन लोग अभी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए वल्नरेबल हैं। और हम ये इस फ्लड की वजह से हमें पता चला, वल्नरेबिलिटी पहले भी थी और ये एविडेंट हो गई। और इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? रेणुका, कहानी हम बदलेंगे और मिलके बदलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। फ्लड का रिस्पांस हमने 3 फेजेस में किया। सबने किया कि जी अर्ली रिकवरी चाहिए। कैसे चाहिए? फ्लड कैंप्स करने हैं। अर्ली रिकवरी के बाद ट्रांजिशन करेंगे 90 डेज में। कैसे करेंगे? 90 डेज से तो ज्यादा गुजर गए और फ्लड पानी बढ़ता गया, कैंप्स की जरूरत बढ़ती गई। हम प्लान करते थे कि आज हमने इस यूसी में जाना है, तो एक व्हाट्सएप पे रात के 2 बजे मैसेज आता था कि उस यूसी में आज इतनी औरतें इतने बच्चे फंसे हुए हैं, उधर हेल्थ कैंप चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता था हम कहेंगे हम नहीं करेंगे। हमने कहा करेंगे, और अल्लाह ताला ने करा दिया। डॉक्टर भी मिल गए, दवाइयां भी मिल गई, लोग वहां पहुंच भी गए, और अल्लाह ने हमें चुन लिया कि आओ और आके इस काम को कर दो। रिकवरी फेज तक पहुंचते पहुंचते एहसास हुआ कि सिर्फ रिकवरी अलहदा नहीं हो सकती, हमें अर्ली रिस्पांस और रिकवरी को ओवरलैप करना पड़ेगा। साल गुजर गया है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि रिहैबिलिटेशन तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। हमने बड़ा कुछ बना लिया, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज अभी भी नहीं बनी, लोगों के घर अभी भी नहीं बने। बहराम गुल परसों एक इवेंट में कह रही थी कि अभी काफी सारी औरतें पानी में हैं, अभी काफी सारी फैसिलिटीज पानी में हैं। तो उनको बदलने के लिए ये जो हमने 3 फेजेस बनाई थी, वो इतने आराम से हम नहीं पहुंचे। हमने फिर सोचा कि हम तीनों फेजेस को ओवरलैप करते हैं, कैंप्स भी किए, रिकवरी भी की, और रिहैबिलिटेशन भी साथ साथ चलेगी। नेक्स्ट प्लीज। ये वो मैप है जिसमें हमने फ्लड रिस्पांस किया। फ्लड रिस्पांस के अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर में जब हम रीचिंग द अनरीच्ड कहते हैं, तो वो भी इमरजेंसी है, क्योंकि वहां पे तो कोई हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। वो सेटलमेंट्स हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है। मोर देन 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमने हेल्थ केयर प्रोवाइड की, बट हेल्थ केयर ये नहीं की कि जाके डॉक्टर मरीज को देखे और दवाइयां दे दे। इट वॉज ए होलिस्टिक, इट वॉज एन इंटीग्रेटेड, जिसमें सारी की सारी सारे के सारे मिसालें थे। आपने ये स्टॉल्स देखे होंगे, ये स्टॉल्स अलहदा नहीं है, ये एक कैंप के अंदर है। हर कैंप में मेंटल हेल्थ भी था, हर कैंप में साइको सोशल भी था, हर कैंप में फीमेल और मेल डॉक्टर भी थी। हमने एक डॉक्टर के साथ कैंप नहीं रन किया कि अगर औरतें आए तो वो ये ना कहें कि हम कैसे जाएंगे, वहां तो मेल डॉक्टर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक कैंप के अंदर इंटीग्रेटेड थी। और पहला स्टॉल जिसमें आपने देखा कि हमारे कुछ चीजें थी जो डिस्प्ले हुई हुई हैं, जो हमारी कम्युनिटी ने बनाई,
और उस कम्युनिटी में हमने उनको स्किल्स दिए, तो वो भी उन कैंप्स के जरिए दिए। ट्यूटर लेके गए, उनको स्टिचिंग सिखाई, ब्यूटिशियन लेके गए, उनको ब्यूटी पार्लर सिखाया। उससे ये नहीं था कि आज हम इनकी कोई एम्पावरमेंट कर रहे हैं, इससे उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी डिग्निटी, उनकी एम्पावरमेंट, उनकी साइको सोशल क्रॉस हुई। नेक्स्ट। सिर्फ 14 लाख मरीज ट्रीट किए हमने इस फ्लड में। ये आपको बड़ा नंबर लग रहा होगा, ये बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि जरूरत इससे बहुत ज्यादा है। हमें आप सबकी जरूरत है, आप आए, हमारी हेल्प करें, और हम जिसको जरूरत है हम उसको जाके हेल्प प्रोवाइड करें। हम उसको हेल्थ सर्विसेज भी दें, हम उसको मेंटल हेल्थ भी दें। हमारी माएँ, हमारी बच्चियां सेफ डिलीवरीज करें। वो ये ना हो कि वो बाहर पड़ी हुई हैं या किसी ऐसी जगह पे पड़ी हुई हैं कि उनको दोबारा से इन्फेक्शन लग जाए। जो हेल्थ कैंप हुआ, हर हेल्थ कैंप में इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ट्रेनिंग हुई। जब आप एंटर हुए होंगे तो एक वैन खड़ी थी, वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की वैन थी। हर हेल्थ कैंप में हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हमने एक दिन के लिए भी अगर किसी कैंप के लिए हायर किया, तो वो मेड इट श्योर कि उससे कोई इन्फेक्शन किसी और मरीज, किसी और बच्चे, किसी और औरत को ना लगे, और हमने उनको बचाया। ये 4600 मोबाइल मेडिकल कैंप किए, और आज भी हो रहे हैं, खत्म नहीं हुए। सिंध में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। जो तीसरा नंबर आपको छोटा सा लग रहा होगा, ये 1000 का मतलब ये है, एक पेशेंट के साथ उसकी पूरी फैमिली है। अगर एक माँ डिस्टर्ब है तो पूरा घर डिस्टर्ब है। अगर एक बाप डिस्टर्ब है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे सारे डिस्टर्ब हैं। हमने साइको सोशल और मेंटल हेल्थ को पार्ट एंड पार्सल किया। इनिशियली जब फ्लड कैंप्स हुए, तो एक लंबी लाइन आती थी मरीजों की, जिसमें ज्यादातर लोग स्ट्रेस में होते थे। मेरे घर के सामान पानी में चला गया, मेरी चीजों का ये हो गया, और उसके बाद उनको घुटनों में, जॉइंट्स में, सर में, हर जगह दर्द होना शुरू हो जाती थी। ये 1000 नंबर 1000 फैमिलीज हैं, और इन फैमिलीज को ठीक करने का मतलब यह है कि उनकी हमने मजीद बीमारियों से भी प्रिवेंशन की, और उनको हमने एम्पावर भी किया कि वो अपने लिए खुद खड़े हो सके। नेक्स्ट प्लीज। मशहूद ने पहले खड़ा कर दिया सबको। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, अपने सारे फील्ड के मील ऑफिसर, उनके लिए खड़े हो जाएं। इस तस्वीर में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का बंदा है, जो इस तरीके से फील्ड में गया, कैंप्स के लिए दवाइयां लेके, और कैंप्स किए। 2 दफा डूबते डूबते बचा। ये हमारी मिडवाइफ है, जो अपने सर पे सामान उठा के कैंप करने के लिए गई। उसका घर इफेक्टेड था, वो खुद इफेक्टेड थी, लेकिन उसने हेल्प की। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बोट्स को अरेंज किया। ये खुद बीमार थे, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। और ना रात के 1 बजे 2 बजे, जिस वक्त इनको कहते थे, लगता था सब जाग रहे हैं, और सब हर वक्त हाँ करते थे, कोई ना नहीं करता था कि हम नहीं जाएंगे। और ये गए, और इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं था। मैं जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज बना लेती, आप जितने मर्जी पैसे दे देते, अगर ये लोग ना जाते तो कोई काम नहीं हो सकता था। तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे दो चीजें थी, एक SRH और एक GBV, जो हमारे इस प्रोजेक्ट के कंसेप्शन में हमने कंसीव किया। SRH में सबसे बड़ा ये था, जब हम ये बस लेके गए, कि औरतों को डिलीवरीज के लिए क्या किया जाए, कैसे प्रोवाइड की जाए। तो हमने मोबाइल बस की। मोबाइल बस हर जगह नहीं जा सकती थी, काफी सारी जगहों पे जाके वो रुक गई। रीजन बीइंग, उससे आगे तो रास्ता ही नहीं होता था, लेकिन कम्युनिटी तो वहां पे थी, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए।
हमने टेली मिडवेफरी की। टेली मिडवेफरी भी एक जगह पे जाके रुक गई, फिर उससे आगे कैसे जाया जाए? हमने एप्लीकेशन डेवलप की और हम वेल के नाम के साथ एक टैबलेट में वो एप्लीकेशन थी। मिडवाइफ वो लेके जाती थी, वो औरतों के घर में जाके उसका एंटीनेटल के लिए बुक करती थी, उसके पास पूरा सामान होता था और वो गायनाकोलॉजिस्ट के साथ उसको लिंक करती थी। लो रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होती थी और वो जाके हमारे किसी भी सेंटर पे डिलीवर होती थी। ये सारे वो थे मैकेनिज्म्स जिसमें रीचिंग द अनरीच था और कहानी बदलनी थी और कहानी बदलेंगे हम। नेक्स्ट, ये वो बच्ची है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, ये इस बस में पैदा हुई थी और ये हमारा टेली मिडवेफरी है जो कि आपने स्टॉल में देखा होगा। और इस इनोवेशन की सिर्फ फ्लड में जरूरत नहीं है, बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जिस तक हमारी हेल्थ फैसिलिटीज और हम नहीं पहुंच सकते। हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमें हेल्थ केयर के एक्सेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट मीन्स एंड मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। एक तरीकेकार से हम उन तक नहीं पहुंच सकते। टेली मिडवेफरी पे जब हमारी पहली डिलीवरी हुई तो मुझे बहुत टेंशन थी कि ये कैसे होगा, बट वो बहुत सेफ डिलीवरी थी क्योंकि उसके सारे एंटीनेटल एक गायनाकोलॉजिस्ट ने किए थे और एक वो सेफ जगह पे डिलीवर हुई। तो ये तो एक बहुत मैजिक चमत्कार हो गया। उसके बाद जब हम उसको आगे गए और हमारी मिडवाइफ एक एप्लीकेशन लेके गई तो मुझे लगता था ये नहीं हो सकेगा और उसके बाद वहां पे उस जगह पे डिलीवरीज हुई जहां पे पॉसिबल ही नहीं था कि कोई हेल्थ केयर सिस्टम जाए। ये रीचिंग द अनरीच था, ये कहानी बदलनी थी और कहानी बदलेंगे। नेक्स्ट, $20 चाहिए सिर्फ एंटीनेटल की डिलीवरी के। $20 हम कितने बनते हैं मशहूर? $20 3,000 रुपया। 3,000 रुपया तो मेरा ख्याल है हम एक कुर्ता खरीदने में लगा दें, 6,000, या हम कोई खाने में। तो $20 से हम एक सेफ डिलीवरी कर सकते हैं और उस जगह कर सकते हैं जो औरत आपके पास आ नहीं सकती, वहां हेल्थ फैसिलिटी है नहीं, वहां कोई और जा नहीं सकता। और आपकी कंट्रीब्यूशन से, आपके $20 से हम बहुत सी औरतों, बहुत सी माओं, बहुत से बच्चियों को बचा सकते हैं। कितने लोग $20 के लिए कमिट करते हैं? हम जाके फूड पांडा पे ऑर्डर करते हैं तो मेरा ख्याल है $20 से ज्यादा का डेली का बिल आ जाता है। और अगर हम ये सोचें कि इस $20 से हमारी एक बच्ची सेफ डिलीवरी करवा सकती है, एक बच्चा सही सलामत पैदा हो सकता है, तो वो उससे बहुत बेहतर है। जो दूसरा हिस्सा था इस प्रोजेक्ट का था वो था विमेन एम्पावरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसके लिए विमेन गर्ल फ्रेंडली स्पेसेस बनाई गई। वो स्पेसेस एक प्रोटेक्शन की स्पेस नहीं थी कि यहाँ पे औरतें आएंगी और प्रोटेक्ट होंगी, घर वाले इनको मारेंगे और ये। वो स्पेसेस ऐसे थी जिसपे औरतों को हमने एम्पावर करना था, उनको स्किल्स देने थे और अगर उनके पास कोई ऐसा मसला हुआ, कोई वायलेंस हुआ, तो उसको रेफरल पाथवे बनाना था। हमने रेफरल पाथवे, लीगल पाथवे डिजाइन किया, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की, अपने पार्टनर्स की ट्रेनिंग्स कराई और उसके बाद जितने हमारे पास केसेस आए उनको रेफर किया। इन सारी औरतों को ना सिर्फ मेडिको लीगल दिया गया बल्कि उनको स्टिग्मेटाइज भी नहीं किया गया कि ओहो इसके साथ तो ये हो गया। उनको एम्पावर इस तरह से किया गया कि वो बिल्कुल एक ऐसे ही हों जैसे हम सारे हैं। उनको हमने स्टिचिंग के स्किल्स दिए, एम्ब्रॉयडरी के दिए और साथ ब्यूटिशियन के दिए। पीछे चाहिए, ये पीछे सॉरी, ये सारी लाइव वो चीजें हैं जो हुई। ये हमारी अपनी ही डिस्ट्रिक्ट्स की पिक्चर्स हैं। आगे चले। अच्छा, हमारी ये 18 विमेन गर्ल फ्रेंडली स्पेसेस थी
और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा औरतें और बच्चियां थी जिनको एक्सेस ही नहीं था, और इनको हमारी इन वुमेन गर्ल फ्रेंडली स्पेसेस की वजह से एक्सेस मिला टू फ्रेंडली स्पेसेस के लिए। रेफरल पाथवे हमने अपने पार्टनर्स के थ्रू बताया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये नंबर बड़ा है कि छोटा? ये हमने इनको बेनिफिट दिया through 18 women girl friendly spaces. Not only the 18 women girl friendly spaces, but also all the health camps, all the integrated health camps. We provided services with integrated health camps and provided and protected them from gender-based violence. Next. Crisis is not over. ये तो हमें उसने बता दिया फ्लड ने कि ये चीज हो रहा है, लेकिन अभी भी जो क्राइसिस है वो है, अभी भी लोग पानी में हैं। 1.6 million people are still in flood affected areas और पानी के अंदर है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है। जो चीजें थी वो खराब हो गई, जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो उस तरह नहीं बनी। आप अपना एक पेपर लिखते हैं, एक कागज लिखते हैं, वो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाए तो इतना दुख होता है। जिसकी सारी जिंदगी की मेहनत होती है और एक घर में वो चीजें बनाता है और पानी ले जाए और अभी भी वो पानी में हो, तो उनको बहुत दुख होता है। इनके लिए हमें अभी काम करना है और जो हमने काम किया है उसको दरमियान में नहीं छोड़ना। नेक्स्ट प्लीज। 6.1 मिलियन ये वो हैं 1 साल के बाद, 1 साल हो गया फ्लड को, इनको अभी भी हमारी असिस्टेंट की जरूरत है, जो मैं नहीं कर सकती जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे। मेरी टीम के बगैर मैं नहीं हिल सकती, और हम सब मिलेंगे, मिलके करेंगे तो ही कहानी बदलेंगे, और हम कहानी बदलेंगे। 25 तक बदलेंगे या 26 तक बदलेंगे, ये मुझे आपसे पूछना है। जो काम किया है उसको अब छोड़ के पीछे हट जाने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो किया वो भी जाया हो जाए। इसको सस्टेनेबल करना है, इसको आगे बढ़ाना है और उसको कहानी को बदलना है। आगे चलो, आगे। कहानी बदलेंगे? नहीं बदलेंगे तो हम कैसे कहानी बदलेंगे? मेरा सवाल है आपसे। कोई इसका जवाब देगा? इमरान? कैसे बदलेंगे? कौन कौन साथ देगा? कौन कौन $20 देगा? कौन कमिट करेगा? हम अपनी सैलरी का अगर 1 दिन का या अपना हम फूड पांडा का 1 दिन का बिल दे दें तो हम एक लाइफ बचा सकते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी बदलें और हम सब के मिल के बदलेंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। आपको मैं एडिशनल रोल दूंगा CRD की फंड रेजिंग कैंपेन्स का भी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बट थैंक यू, इट इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग एंड हार्ट रेंचिंग ऑल्सो। मुझसे कोई पूछ रहा था कि चीफ गेस्ट कौन है, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा तो एक ही चीफ है और वही हमेशा हमारा चीफ गेस्ट होता है। आप सबकी भरपूर तालियों में, जिनकी वजह से, जिनके ख्वाब की वजह से, उनके दोस्तों की वजह से, उनके साथियों की वजह से डॉक्टर माँ ये सब कर पाती हैं और हम सब उसमें अपना हिस्सा डाल पाते हैं और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं दावत दूंगा डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, प्रेसिडेंट इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क को, कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहें प्लीज। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वाहिलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। After elaborative and thought-provoking presentation by Mashood Rizvi, an emotional presentation by Dr. Maatalat, I'm left with nothing just to thank you all. Thank you, Madam. Thank you, everyone. Thank you, Maatalat, and the team. I was with her in the initial days of the camp to Thatta. And when we were meeting people, it was very, I could see the emotions of Matalat. She was crying. And she wanted to give money to everyone, whatever. So I stopped her. I said, whatever you have, it will be too little. अरे गंगामा हो जाएगा यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से रोका इनको. And what Indus is today, in mere 15 years, what we are, is because I'm fortunate to have such a great team. Every one of the one, starting from the security to the housekeeping to the top level, it is all because of them what we are today. And you people, thank you all who are, as Mashood said, the sea of choice. You are chosen people. And I am, from the bottom of my heart, I'm thankful to all of you. The challenges which we have cannot be achieved unless we partner with each other. Collaboration, collaboration, collaboration. And we have seen this during COVID. The public sector, the private sector, the not-for-profit sector, everyone collaborated, and we have seen the results of Pakistani efforts. Mahat Talab has asked question, kya kahani badlenge? Ma, whenever you ask any question, we were all positive, always positive. So, and I am grateful that the sole motivation for Indus Hospital is the firm belief, the firm faith in the God Almighty. And I am grateful that
every single member of Indus Hospital has the same belief, and it is from here. We will change the story. Inshallah, we all together will change, and during our lifetime, we will see a healthy, prosperous Pakistan. Thank you all. Thank you, sir. Not for any discrimination reasons, but for convenience only. If I can just request the front 2 rows to please join us for the candle lighting in solidarity with all the survivors of gender-based violence, and in recognition of their resilience, let us light some candles of hope. Please, the front 2 rows kindly. और इसके बाद नमाज का वक्फा है और उसके बाद डिनर विल बी सर्व्ड.
ठीक है. Thank you, everyone, dear guests. Sorry. Okay, I'll repeat again. Thank you so much for being here today. The dinner is served, and our team will lead you there behind the pledge wall. Okay, the dinner will be served after the namaz. Thank you so much.